हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? और हम आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे। और हम एक नए लाइव लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोग जल्द से जल्द इस लाइव लेक्चर सेशन से आप कनेक्ट हो जाइए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में हमने जाना था और मॉड्यूल्स एंड पैकेजों के बारे में। तो अब हम आगे जानेंगे। तो जो हमारा आज का सेशन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसको आप समझ लीजिए क्या क्या हम सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। और इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। सब लोग जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाइए और आप हमें लाइव चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस पुटअप कर दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसी क्वेश्चन से हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर दिन एक नया टॉपिक आपको बताने के लिए। इसीलिए हम लाइव आते हैं और लाइव में इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं कि आप कि हर क्वेश्चंस का जवाब आपको बेहतर तरीके से मिल सके। ठीक है, और जो हम आज जानने वाले हैं उसके समझ लीजिए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सेप्शंस आर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स errors and runtime errors, use try, except, else and finally, handle multiple exceptions, raise customs exceptions using rise, handle multiple exceptions, rise custom exceptions using rise, create user defined exception classes, write robust and error free Python programs। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग इस लाइव क्लास में जुड़िए जल्दी से जल्दी। आप लोगों के लिए ही हम आए हैं और हम आशा करते हैं कि आप शीघ्र ही हमारी इस लाइव क्लास में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे, लाइक शेयर और कमेंट करके। जो नए आएंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उन्हें हमारी अगली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए और हमारा उनका एक जो जुड़ाव है, लाइव कनेक्शन है, वो भी हो जाए सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। In the previous lectures, we learned about modules and packages with help organize large Python projects. Today we are going to learn a very important concept used in every professional's applications, exception handling. Imagine you are building a banking apps. If a user enters text instead of a number, so should be program suddenly crash? Of course not. A good program should detect the errors, inform the user and continue running whenever possible. That exactly that exception handling does. तो आप समझ रहे हैं कि जो एरर को डिटेक्ट कर ले और उसे इन्फॉर्म कर दे यूजर को, और कंटिन्यू रनिंग के लिए जो जितना हो सके उसे पॉसिबल बना दे, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम है। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? एन एक्सेप्शन इज एन एरर दैट अकर व्हाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग रन टाइम। तो रन टाइम के टाइम में जो भी एरर्स आते हैं उसे प्रोग्राम में, तो उसे यूजर को इंडिकेट्स कर देता है रनिंग टाइम में, और एज सून एज पॉसिबल वो वर्किंग को हैंडल करने का प्रयास करता है रन टाइम में। ठीक है, तो एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे प्रिंट 10/0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 डिविजन्स एरर। डिवीजन इज बाई 0, 0 डिविजन्स एरर, डिवीजन बाई 0। Python stop executions because it cannot divided by 0.
Python stop execution because it cannot divided by 0. Types of errors. Syntax errors occurs when Python code is written incorrectly. Examples: if true, print helps. If true, print helps. Output syntax errors. Runtime error exception program start successfully but crash while running. Examples: numbers is equal to int input, enter numbers. If the user enters A, B, C, output value errors. Okay. Now common exception in Python, exceptions and causes: zero division error, dividing by zero, value error, invalid value, type error, wrong data types, name errors, variable not defined, index error, invalid list index, key error, directory key missing, file not found, file does not exist, attributes error, invalid object attributes. Okay, they try except black, they try except block, syntax. So try comments, raise risky codes, except execute if an error occurs, and try numbers 10 by 10 except print an error occurred, output an error occurred. ठीक है. हैंडल तो आपका हो जाएगा कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन, कैचिंग स्पेसिफिक एक्सपेक्शन. Now try numbers 10 by 10 except zero division errors, print cannot divided by 0. Handling value errors, Python. Try age input, enter age, accept value errors, print please enter number only. Now handling multiple exceptions. Now handling multiple exceptions, Python. Try numbers input, enter numbers, and result 100 by numbers, accept value error, print invalid inputs, accept zero division errors, print can't divided by 0. Okay, using multiple exception together. Try value int input, accept value error, type error, accept value error, type error, print invalid input. Now the else block run only if no exception occurs. Try number int input, enter numbers, accept value error, print invalid numbers, else print you entered numbers. Finally block always execute whether the exception occur or not. And try file opens, simple text, accept file not found errors, print file not found, finally print program finished. Now complete the examples of programs. Try number int inputs, enter numbers, print 100 by numbers, accept value errors, print please enter an integers, accept zero division errors, print else, print calculation successfully, finally print thank you. Rising exceptions, you can generate your own exception using rise. Examples: age equal to -5. If age is less than 0, rise value error, age can't be negative.
Value error age can't be, negative is output. Creating custom exceptions, class invalid age errors, exceptions pass, use it. Python age -2, if age is 0, rise, invalid age errors, invalid age. Practical examples, ATM withdrawals. Practical examples, ATM withdrawals, balance 5,000, try, can't be, int, input error amounts, if amount, balance, rise, exception, insufficient balance. Balance minus is equal to amounts, print remaining balance, exception, as error, print error. Now practicals, safe list access. Practical example, safe list access. Numbers is equal to 10, 20, 30. Try, print number 5. Except index error, print index does not exist. Now many projects, simple login systems. Okay, usernames, admins, password 1, 2, 3, 4. So try. Username U is equal to input username, P is equal to input password. If U is equal to username or P is password, rise exception, invalid login, print welcome, accept exception as E, print E, finally print login attempt finished. Best practices, catch only the exception you exact, avoid using a bare except unless absolutely necessary, write clear and helpful error message, use finally to close file or raise recurrence. Resources, does not hide errors. Common mistakes of every students, catching every errors, Python, try, accept and pass. This hide importance problems better, accept value errors, print invalid input. Ignoring resource is cleanup. Ignoring resource is cleanup. Better, Pythons. Try files opens, data.txt, finally file.close. Or even better, use Python with open data.txt as file, print file.read. Now your interactive questions for interview. So what is an exception? So an exception is a runtime error that interrupt the normal flow of a program. Differentiate, next question, differentiate between syntax error and executions. Syntax error and exceptions. Syntax error is that occurs before execution due to invalid code. Exception is occurs during execution due to unexpected conditions. What is the purpose of finally? It always execute regardless of whether an exception occurs. What does rise do? It manually generated an exceptions. Next question, why create custom exceptions? To represent application specific errors conditioned clearly. Now practices questions, write down. Handle division by 0, handle invalid integer inputs. Next, read a file safely using exception handlings. Next question, create a custom exceptions for invalid marks. Build an ATM program with exception handling. Create a login system with 3 attempts. Create a login system with 3 attempts. Next, handle index error while accessing a list. Handle key error while accessing a dictionary. Now today we learned this lecture. What is an exceptions? Syntax error versus runtime error. Try, accept, else, finally. Handling multiple exception arise.
कस्टम एक्सेप्शन, बेस्ट प्रैक्टिस, मिनी प्रोजेक्ट्स। तो आप लोगों का ये जो सेशन लेक्चर रहा किस तरीके से रहा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कोशिश करा करिए कि बहुत ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, सब लोग जुड़ने का प्रयास करिए। जितने अधिक से अधिक लोग आप जुड़ेंगे उतना ही आप सभी के लिए एक बेहतर सेशन लेक्चर हम चला पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आप लोग इसलिए तैयार रहा करिए लाइव क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, और अब एक नया टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन का, तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट फाइल हैंडलिंग इज एंड व्हाई इट इम्पोर्टेंट। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ने का प्रयास करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको हम इस सेशन के लेक्चर्स को और आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आ जाइए सभी लोग इस लाइव सेशन में। आप जितना भी प्रयास करेंगे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए उतना ही ये बेहतर क्लासेस होने वाली है। और इसी के साथ हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों का सहयोग जितना अधिक रहेगा, आपके सहयोग से ये लाइव सेशन चल पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए, और कहीं पर भी कोई परेशानी हो रही है किसी भी सेशन के लेक्चर के बीच में, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें बता सकते हैं। तो और कहीं पर भी कोई भी किसी पर प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस लाइव सेशन से संबंधित कहीं पे कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम आपके हर एक लाइव सेशन के पूछे गए आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए हम आपके क्वेश्चन का वेट करते हैं। आप लाइव चैट में आइए और हमें कमेंट करके आप हमें क्वेश्चन पूछिए। पाइथन से रिलेटेड हो या कैरियर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको एक बेहतर ऑप्शन आपको देंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए जिसलिए ये सेशन लेक्चर हम स्टार्ट कर सकें आगे के लिए। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसको समझिए। अंडरस्टैंड व्हाट फाइल हैंडलिंग्स इज यूज्ड and why it is important. Now open read write and opened files. Use different file modes, RWAX. Use different work with open for safe for handlings. Read file line by lines. Handle file related exception, build simple real world applications using files. Hello everyone, welcome back to our Python programming series exception handlings. Previous lecture learned exception handling in which helps to write program that can recover the error gracefully. But what happened if you want to save data permanently? For example, save student marks, store employee records, save login credential, write application logs, maintain customer details now. So variables only they store data temporarily occurs once the program close, the data is lost, the store information permanently. We use file. Today we learn file handling in Python. So now what is file handling? File handling is a process of creating. काफी आज लाइट स्लो आ रही है, पता नहीं क्यों। तो गाइस
आप लोगों को थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है क्योंकि बार बार ये कनेक्शन में थोड़ा इशू आ रहा है, और हमें लगता है ये मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश की वजह से हो रहा है। तो हम मिलते हैं आपको पुनः लाइव में, और इस लेक्चर को यहीं पर एंड करना पड़ेगा क्योंकि सही से अगर क्लियर मैसेज नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे सेशन का कोई मतलब नहीं होता, आप लोगों को बार बार इंटरप्ट होना पड़ रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।